Hello and welcome to another episode of the Ultra Edge podcast. मैं हूँ रोहाना दी और आज के जो मेरे गेस्ट हैं इन्होंने क्रिकेट में बेशुमार काम किया है. इनको आपने PSL में भी देखा और अभी अपनी स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहे हैं. ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में इन्होंने क्रिकेट के ऊपर भी बहुत काम किया है. सोशल डेवलपमेंट के काफ़ी इनिशिएटिव्स ये लीड कर रहे हैं और आज हम इन सब के बारे में उनसे बात करेंगे. ख़ास तौर पे जो उन्होंने रिसेंटली एक ऑक्सफोर्ड की स्कॉलरशिप अनाउंस की है. वी विल टॉक अबाउट ऑल ऑफ दैट. It gives me great pleasure to introduce Mr. Ali Tareen, the Ultra Edge podcast. Hello, Ali. Welcome. Thank you. I've been a huge fan of yours for years, as you know. Wow. So it's an honor for me to be on your show. It's my pleasure to have you today because we have so much to talk about. Especially इतना काम जिस तरह मैं इंट्रो में बात कर रही थी कि there's so much that you have done. First of all, congratulations on everything that you've achieved so far. South Punjab में आप इतना काम कर रहे हैं. हम सबके सामने है वो PSL तो एक बहुत छोटा चैप्टर है अभी तक आपकी लाइफ का. And I'm sure आगे भी we will continue to see more and more initiatives from you. But Ali, what's up? What's been up? Busy with work. Abhi cricket season coming to an end. Yeah. So just busy with work now. You travel a lot, by the way. You're in and out. It's very hard to get hold of you, but we finally did. So because most of our businesses are spread across South Punjab. So Lodra mein, Khanewal mein, Rahimia Khan mein, and then towards Sindh also. So I'm just mostly in a car. Well, most of my life spent there. Again, very grateful कि आपने time निकाला आज because we wanted to talk. Because I'm your fan, bro. Obviously, मैं तो कह रहा हूँ. अच्छा, खैर, I know he's bluffing यहाँ पे, but we will ask him quickly about what, because ये बड़ा basic सवाल मैं आपसे start. I'm going to do a very basic question which I'm sure you have heard like thousands of times. But cricket का शौक आपको कहाँ से हुआ, कब हुआ? What was your first memory of cricket? वो एक moment होता है cricket का, या when you fall in love, जब वो violence बजते हैं, वक्त रुक जाता है और एक time slow motion में गुजरता है. What was that moment for you with cricket? First for me, I remember I've been playing cricket since I could stand. I was holding cricket bat. Huge fan of cricket. लेकिन I'll tell you some key moments. I have one worst memory and one best memory बताता हूँ. Worst memory था कि this is when India Pakistan had good relations. तो हम दिल्ली में हमारे दोस्त होते थे, my parents friends, so we would go there often. तो वहाँ एक मैच हो रहा था, टेस्ट मैच हो रहा था. तो हमने कहा ग्रेट, लेट्स गो द मैच. सो मी, माई फादर, माई सिस्टर हम चले गए दूरबीन शू में लेके. बहुत एक्साइटेड कि फर्स्ट मैच फॉर वॉचिंग इन इंडिया, बड़े खुश. वो हम वहाँ गए और फिर पाकिस्तान एक विकेट होगी, फिर दूसरी होगी, फिर तीसरी होगी. एंड दिस वाज दैट मैच अनिल कुंबले टुक 10 विकेट्स. Oh my God. So I still remember now, which I still वो triggers me now कि every time वो आउट करता था अनिल, everyone stand up and start going crazy and celebrating, and they thought कि मैं young, I was like क्या 5-6 साल का होऊंगा, डेट भी याद नहीं है, but everyone thought मैं भी Indian हूँ. So they kept picking me up and celebrating. I'm like यार I'm unhappy भाई, stop, I'm not celebrating this. So this is my worst memory. What a match you chose to watch. The only match I've seen in India was that one. So yeah, that was my worst one. I think best one बचपन में school cricket में I had a very late growth spurt. So I was a short kid. Okay. So when I was a short kid, I was a leg spinner. So मैच हो रहा था, obviously टेबल मैच लाइट्स में, was a huge thing. पूरा स्कूल आया था, माँ बाप आए हुए थे. तो लास्ट ओवर में for some reason I was selected to death bowling as a leg spinner in a tape ball match. And they must somehow, have seen something in you. 3 विकेटें लेके एक रन आउट करके आखिरी बॉल को वो आखिरी सेकंड लास्ट बॉल पे 6 to win मैंने कॉटन बोल्ड किया था. And the entire crowd went crazy. Wow. My parents running on the field. My principal came and hugged me. So that was my absolute peak of my cricket performance. उसके बाद बस downhill ही है सारा. Yeah, that was my next question. Why didn't you pursue it? Because you had resources, you had access, you went to the best schools. Even at Oxford, ये एक option तो आपके पास होगा because इतना prestigious cricket history है Oxford की. Was this ever something that crossed your mind कि मैंने क्रिकेट खेलनी है और अगर खेलना चाहूँ तो ये ऑप्शंस हैं मेरे पास? स्कूल क्रिकेट मैं रेगुलरली खेलता था, स्कूल कैप्टन भी था. तो जब मेरी ग्रोथ स्पर्ट आ गई फाइनली एट एज 30 when I came back at all man, so obviously I decided that this is the time to become a fast bowler because obviously the only way to impress girls is to be a fast bowler. Wow. So मैं immediately as soon as I could I became a fast bowler. I want you to say that and again. then I became a very bad fast bowler and then I became a vatta fast bowler. So then my cricket career stalled. Because vatta शुरू हो गया था मेरा. But then in later my life then I started playing cricket again. And even now every summer I play cricket in England as an overseas player. Did you impress any girls though? या ये बस every futile attempt? In my mind तो मैंने बहुत impress किया. बाकी हमारे स्कूल में Speed कितनी थी आपकी? Speed I think अभी recent test कराया था like 124, 125. उस time? Not bad for middle aged man. Not bad. You were very impressive. This is not TV speed, it's real speed.
वेल आई एम श्योर यू डिड इम्प्रेस अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ज़ाहिर है क्रिकेट के अंदर आपने इतने लोगों के साथ काम किया है एंड यू डू हैव दिस आपके बारे में एक इंडस्ट्री में भी ये बात काफ़ी मशहूर है दैट यू हैव दिस वेरी चार्मिंग एंड अप्रोचेबल पर्सनैलिटी इवन व्हेन वी यूज्ड टू सी यू ड्यूरिंग द PSL मैचेस. तो आपकी एक बॉस वाली वो एनर्जी नहीं है, इट्स नॉट इंटिमिडेटिंग, इट्स द ऑपोजिट, इट्स वेरी अप्रोचेबल एंड दैट्स व्हाई पीपल एंड या इवन द प्लेयर्स यू वर्कड विद, द मैनेजमेंट, हम जिससे भी बात जब भी करते हैं तो वो हमेशा ये कहते हैं कि यू वर ऑलवेज वेरी अप्रोचेबल. हाउ डिड यू was this something जो हमेशा से आपके अंदर था, ये personality trait? क्योंकि being in a leadership position बड़ा आसान होता है to become like a dominant person and a difficult person. I think even in sports or in politics, to be my brief time in it, I think it's important not to take yourself so seriously. So I think that's my main thing. I don't think if all the politicians could learn that, I'm something. So I think that's the even in life, like nobody should take themselves too seriously, है ना? Exactly. Yeah, that's why when people are trolling me online also, I'm like, funny. You must get that a lot. So whenever I see people trolling me and it's funny, I always like it or reshare it because actually मुझे खुद हंसी आती है. अच्छा, आपकी Twitter presence भी बड़े मजे की है. I appreciate good humor always. And you oftentimes you respond with good humor as well. So I think you really enjoy Twitter. Even I remember when you posted your graduation photo. वो भी इतनी उसमें भी योर कैप्शन वाज जस्ट लाइक एक बड़ा रियल मोमेंट था जो आपने शेयर किया. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नॉट टेक योर सेल्फ दैट सीरियसली बट यू मस्ट रिसीव अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑनलाइन एज वेल. कैसे डील करते हैं अली? क्योंकि आसान नहीं है बीइंग पार्ट ऑफ अ पॉलिटिकल फैमिली एंड देन बीइंग इन द पब्लिक आई डूइंग सो मच वर्क. बहुत सारी ऑपोजिशन मिलती होगी आपको ऑनलाइन. हाउ डू यू डील विद इट? यू हैव टू एक्सेप्ट कि तो होना है. सो देयर बी पीपल लाइक यू, पीपल डोंट लाइक यू. द रियलिटी है. Accept it. Cricket के अंदर ये हुआ. And just keep good humor, laugh at the funny stuff, whether it's positive or negative. Funny is funny. Well, that's really impressive कि आप ये mindset लेके एक continuity के अंदर चलते हैं. But cricket के अंदर when you were working in PSL, tell me about that. मुल्तान सुल्तान्स को buy करने का, being involved because उस time तक PSL एक brand बन चुका था. बिल्कुल. क्या सोच के आपने इसमें अपना कदम रखा? क्या vision था और क्या वो vision पूरा हुआ उस time पे? So obviously as any cricket fan, having the opportunity to be part of a team in any capacity obviously is a dream come true. To be an owner of the PSL team and make the structure initially, find the coaches, the strategy heads and so on, meet the people, be in the dressing room, listen to the strategy being discussed. Amazing experience, absolutely amazing, one of the best experiences of my life. So I was very, very privileged to have this position. And bas usme hamara, I think the main goal which I've always had and I'm still working on now is not the I think again not talking about anyone specifically, but काफ़ी ये होता है कि people who get involved in cricket I want to be involved maybe sometimes for the कि I'm hanging up with this famous player या ये मेरे घर आ रहा है. This is not Pakistan में generally बात कर रहा हूँ. I remember there was a CPL में someone I know worked in there. तो when the players came and he was managing them, the owner was like, इनको बताओ मेरा घर कितना बड़ा है. तो इस तरह का बहुत कुछ होता भी है कि कि मैं हाई लेवल मेरे लो हाई लेवल रॉन्ग रीजंस एंड नो इट्स नॉट रीजंस, इट्स देयर रीजंस. हर किसी का अपना शौक होता है. सो उसका वो था. मेरा आई थिंक फॉर मी बिकॉज आई लाइक क्रिकेट एंड आई न्यू सो मेनी प्लेयर्स, आई वर्क विद देम फॉर सो मेनी इयर्स. तो माय थिंग वाज कि आई वांट टू मेक द यूज दिस एज अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेयर्स टू डेवलप एंड गो टू द नेशनल टीम. सो इनिशियली बात भी करता था कि वी वुड लूज मैचेस especially my first season, but उसमें होता था कि Ali Shafiq took 3 wickets that day and I'm like how can I be upset when Ali Shafiq ने debut किया 3 विकेट ले गए. How can I be upset? जब ज़ीशान अशरफ ने 50 कर लिया on his first day, मैच हार गया ठीक है, but how can you not love the story कि a guy from nowhere is now impressing on international stage. तो for me this was always the key driver. तो अभी भी for example जो भी टूर्नामेंट होता है, रमज़ान टूर्नामेंट हो रहा था अभी, या कि हम अकेडमी में चीज़ें कर रहे होते हैं या दूसरी टीम हमें हरा रही होती है, but for example in the final, I will never forget that final because Shaheen Afridi's innings was one of my favorite innings of all time. How can I be upset? जब टीम आखिरी बॉल पे हारी, which means a very competitive match, everyone played really well, and Shaheen played one of his best innings of all time. That was promoting himself beautiful. up the order, coming down the stairs, people looking at him. Almost. Amazing. So I absolutely love that match. I have no negative memories from that match, as an example. अच्छा अली, आप हमेशा से ना even in your interviews and generally भी Twitter पे हर जगह पे you always have this very positive sentiment towards other franchises. आप बाकी players को support कर रहे होते हैं, young players को support कर रहे होते हैं. वही बात है कि आपने अपनी franchise को भी उस तरह से परसीव नहीं किया कि ये मेरे लिए डू और डाई है. जिस तरह कभी कभी आप फ्रेंचाइज कल्चर में कंपेरेटिवनेस आ जाती है, आपने अपने आप को कैसे दूर रखा उस कंपेरेटिव सेंटिमेंट से? But it wasn't a conscious decision. I just, for example, I love Haris Rauf.
Yeah. अब जब वो अच्छा करेगा, मेरी टीम हो किसी और की टीम हो, मैं तो खुश होऊंगा. Similarly, जो बाकी प्लेयर्स हमारे आ रहे हैं, साइम अयूब, when साइम अयूब came on अभी in this PSL, Yeah. क्या उसने शॉटिंग खेली है, किस तरीके से खेला है, मतलब मेड एवरीवन हैप्पी. तो ऐसे ही है. अच्छा, आप जिस सीज़न जो आपका पहला सीज़न था, इट डिडंट गो रियली वेल, बट शान मसूद को जब आपने कैप्टन बनाया, इसके पीछे क्या थिंकिंग थी, क्या लॉजिक था, और क्या इन्विजन, डू यू स्टिल सी शान मसूद एज पॉसिबल कैप्टन मटीरियल? So जब हमने टीम जब इनिशियली खरीदी थी, it was after the draft. Yeah. So the draft had been done, the team management already existing. So we thought कि we'll just see the season and learn कि how does the PSL team function before we make changes. So that's why in the first year the team बनी हमें मिली थी. तो उसके बाद हमने देखा कि अच्छा how can we change things. So when we changed things, the first thing we did before we hired a coach, हमने decide किया me and my चाचा कि what kind of team do we want. हमने obviously बात की from data. He was also a baseball fan, so he was also a data fan. So we hired Nathan Lehman first, who was the chief strategist for us, and he's the guy who started all the data program, the data department at the ECB. So we got him in first. Yeah. He suggested Andy as a coach who likes data as well. So first Nathan came, and then Andy came, and then the whole team developed around that. So just setting that ethos now was a big thing. So when Nathan and Andy interacted with our players, they're the ones who suggested there is no question in this squad. The only leader we have who will run the team this way with all the data and all the innovative stuff we're doing is Shan Masood. So this came from Andy and Nathan. He was very receptive or very accepting of the fact कि data एक बहुत important role play करता है. And having the mental capacity to look at what's happening on ground and receive the information from us as well, and then make his own decision based on that. That is not something everyone can do. So it's a very complex thing, you know, to incorporate इतना different तरह का feedback. Absolutely. So he started it, and now Rizwan is taking that to an even higher level. So we've been very blessed with these natural leaders in the Multan squad. Yeah, but you know, credit to you and to Nathan and to all, like Andy Flower का वो पूरी thinking, अभी तक वो think tank हमें results show कर रहा है मुल्तान सुल्तान्स के अंदर. But you know, आपने ये बात की थी back when you bought the team. You said कि हमने data को तो incorporate किया ही है, but we also removed bias from the team. What was that thinking? So I want everyone. I can ramble on this for a long time. Yeah, take your time. If I ramble on this, so in any team I've seen built, there's always bias. It's not कि कोई किसी की गंदी नियत है. So for example, if I am selecting team, मेरे naturally favorite players होंगे. I'll be like, you know, I want Ilyas to play, for example, or I want this guy. I want Rizwan to be the captain. I want this. I want that. It might be a good decision, but it's coming from not only what I think is the best decision, but something else also. The reason I like this person is because of X, Y, Z, right? So I can have my own favorites. Every coach will have his own favorites. You'll see so many times जब franchise एक coach आता है, वो अपने players दूसरी team से ले लेते हैं. Or someone he's worked with before, so many people who worked in academy before. तो हमेशा bias होता है. तो हमारी कोशिश ये थी कि हम एक इतना diverse group बनाए of selection में कि no one person can bully their person in or bully their tactics in. Again, not that they're bullying on purpose, but naturally लोग होते हैं, कोई ऊंचा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है. अच्छा, ऐसे लोग थे कैंप में उस टाइम पे? Naturally होता है. So for example, we had in the first season we had we were working with craze. Yeah. So we had a person called Pat. So he was in our team, and he's obviously a very, very smart cricket data nerd. So when he's in a meeting, and there's 6 of us, the head coach is there, assistant coach is there. So I think they're working with the England Cricket Board, right? So they work with different teams on and off. Yeah. They do a lot of work with broadcasters also, but cricket. So anyway, so he would be in the room, and we'd be having a call, we're discussing a player. Right now, the एक coach उसके बारे में बात कर रहा है, and then he's having an argument with the second coach, and then someone else, the manager is saying, I think this. Ab Pat is quiet. He has data available to talk about this topic, but he's quiet. So my role would be कि I would be like, guys, Pat, what do you think? And then he would give his opinion. And then I would just try to make sure that everyone is giving the opinion, and everyone's opinion is being heard and then being thought about. Otherwise, वही होता है कि एक डोमिनेंट बंदा होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, ज़्यादा ऊंचा बोलता है, ज़्यादा अपना फोर्सफुली आइडिया को शेयर कर रहा होता है. कोई इंट्रोवर्ट्स होते हैं. So as introvert myself, I can feel कि अच्छा, this guy doesn't want conflict, he's just staying quiet. But I would try to encourage him कि तुम भी कुछ बोलो. So having this kind of situation where you have multiple people on board with different experience, all giving their opinions, and then having that person having everyone agree on
the strategy forward. And I think that's why our drafts have gone so well, because we have that kind of think tank बड़ा with layered multiple process expenses. है ये it's not very linear, it's very like complex उस तरह का multi dimensional. That is very good thing कि आपने पहले तो ये acknowledge किया ना कि bias सबका होता है. अब मेरा भी होगा ना. So for example, when we're talking about team selection, तो I'm like, I think I want this guy. I think this guy should open. When is the hardest that you've ever fought for a player? और अभी तक, not just in PSL but overall, like किसके लिए सबसे ज़्यादा आपने जान मारी है प्लेयर के लिए? कोई ज़्यादा नहीं. I'm not particularly forceful in my opinions. मेरा main चीज़ होती है कि I'm just make sure everyone's opinion is being heard and then a decision is being made. I'm not trying to force my decision on anyone. But you said कि you also had naturally bias सबके होते हैं, but कभी ऐसा मौका आया जिसमें you wanted to encourage a player's growth and wanted to give him more chances? For example, ज़ीशान अशरफ की आप काफ़ी बात करते हैं, हम लोगों ने देखी उसकी growth. इलियास का नाम भी, he was also part of the Multan team. कैसे कौन से ऐसे नाम आते हैं माइंड में जिनके लिए आपको you feel really proud of them and want them to really ऐसे बहुत players हैं who I want to see do well and I hope they get the opportunity to do well. But मैं कभी ऐसे पुश नहीं करता था कि इस प्लेयर को हमने खिलाना है या इस नंबर पे खिलाना है. इट वाज मोर लाइक देखो कि हमने फॉर एग्जांपल डिसाइडिंग कि पावर प्ले में हु आर द 3 बॉलर्स इन पावर प्ले, 2 पहले और फिर एक फर्स्ट चेंज, ये कौन है. देन पीपल सेइंग आई थिंक वी शुड हैव मोहम्मद इरफान, टॉल लेफ्ट हैंड बॉलर. देन वी सॉ इलियास स्टैट्स एंड दे वर बेटर स्टैट्स, ही इज मोर इकोनॉमिकल. सो माय थॉट वाज कि इलियास, बिकॉज ही हैज बेटर स्टैट्स इन पावर प्ले, ही शुड बी आवर पावर प्ले बॉलर और डेथ बॉलर एंड सो ऑन. सो आई एम लुकिंग एट द स्टैट्स एंड देन पुशिंग अकॉर्डिंगली. मैं अपना कोई नहीं कि आई लाइक दिस प्लेयर, आई एम गोना पुश हिम. डू यू थिंक ये जो प्रो स्टैट्स अप्रोच है, डू यू थिंक कि अब वो चेंज आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी कि अब हम लोग ज़्यादा रिसेप्टिव हो गए हैं, एक्सेप्टिंग हो गए हैं ऑफ डेटा? बिकॉज कुछ साल पहले तक ये बिल्कुल डिफरेंट था. आई एम नॉट टेकिंग किसी भी मैनेजमेंट का नाम ऑब्वियसली, लेकिन डेटा एक हम आपको पता ही है पाकिस्तान बहुत पीछे होता है बहुत सारी चीज़ों से दुनिया में जो हो रही होती हैं. अब आपको लगता है कि ये चेंज, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है डेटा को देख के हम प्रॉपर्ली? आई थिंक एज द गेम इज इवॉल्विंग और इतनी डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, द वे पीपल आर प्लेइंग क्रिकेट इज़ डिफरेंट, द वे पीपल आर अप्रोचिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द गेम इज़ डिफरेंट. सो इन सब चीज़ों को अकोमोडेट करने के लिए और स्टेइंग करंट विद द न्यू थिंग्स आर हैपनिंग, न्यू स्ट्रेटजीज हैपनिंग, तो डेटा इज अ पार्ट ऑफ इट. इट्स नॉट कि जो डेटा कह रहा है वही करना पड़ेगा, बट डेटा इज अ गुड गाइड. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आई गिव एग्जाम्पल, सो मोहम्मद इरफान who I love, right? I love Mohammed Irfan, South Punjab का भी है, so I love him extra. So बात हो रही थी कि I think our second season in charge कि we were keeping him and when are we playing him? तो they would कुछ ऐसे बात करते थे कि हमें इरफान चाहिए बिकॉज ना वो इस एंगल पे बॉल रिलीज करते हैं, तो इस एंगल पे ना इतना शॉर्ट होता है, तो पिच होता है, तो मुश्किल से खेलना. नहीं, the reason we like him is because his economy and power play is 6.6. That's the reason we like him. But the past 2 years it's been 7.6 and the last has been 8. So जो उसका historic data है, that's great, but currently the only reason we want him, regardless of what angles he's presenting, is he economical, yes or no? अगर नहीं economical तो ये जो फिर तो कहानी है ना. तो हमारे तो पाकिस्तान टीम पे भी बहुत साल यही नहीं चलता रहा कि एक हिस्टोरिक स्टैट या एक वन ऑफ परफॉर्मेंस की बेस पे जो है काफ़ी प्लेयर्स को रिपीटेड मौके मिले रादर देन what the stats have said in the recent past. But obviously stats को आगे थोड़ा करना था. You do, for example, you do want people releasing the ball at different angles. Wrist spinner भी है, कोई off spinner भी है, कोई यहाँ release करता है, कोई यहाँ release करता है. और variation हर किसी की होती है, हाँ. But you can't say कि the reason I want him is only because of this, and if his stats don't back up his performance. His stats should be backing up that he is difficult to hit. So unless the stats are doing it, फिर तो नहीं है ना सच. आपने काफ़ी बात की है कि क्रिकेट के थ्रू सोशल चेंज लेके आना चाहते हैं आप साउथ पंजाब में. इसका क्या मतलब है? लोगों को समझाएं कि कैसे क्रिकेट के थ्रू आप चेंज ड्राइव कर सकते हैं इन दी स्मॉल सिटीज़ ऑफ पंजाब. जब सोशल चेंज की बात आती है क्रिकेट में, माय मेन फोकस इज अबाउट वुमेन्स क्रिकेट. तो जब हमने सो वी हैव अबाउट 86 स्कूल्स इन साउथ पंजाब. इन लोधन जो हमने अडॉप्ट किए हुए हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, तो वहाँ हम ना इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं. वी एडिंग थिंग्स टू करिकुलम लाइक आर्ट, लाइक स्पोर्ट्स, व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट करिकुलम. तो इनिशियली जब हमने टेल यू अ क्विक स्टोरी. The first day we were doing this, we had teachers come in from Karachi. Achha. And we were doing like a sports day and like a play thing in the holidays. So we got all the girls together, and we were like, just ground आपके सामने, go and play. Okay. They were all just huddled together. Okay. Not talking to anyone. आपस में घुसे हुए थे, दुपट्टे पहने हुए थे. These are like 5-6 साल की 8 साल की बच्चियाँ. They just weren't playing. So now our teacher went up to them, this is your time. आप खेलें. We're here for 2 hours. नहीं हमें लोग देखेंगे और फिर क्या कहेंगे. So then we understood obviously it takes a while. So then we called them back the next day, covered their boundaries with tents, and it was just the female teachers.
once they came to that environment ना, यूं दुपट्टे उतरे, भागे भागे गए, playing with the ball, playing with the bat, हर चीज़ करें. They're playing बिल्कुल खुल के. So when we started going to the parents and talking to them कि देखो, we want the girls to be playing sports, confidence की बात भी है, अच्छी चीज़ है, they'll make you proud, art भी करनी चाहिए, ये भी करना चाहिए. Resistance थी initially में. So the way I calculate how much we've grown and evolved in this society is कि we also tried taekwondo. So taekwondo में शुरू की ना, for girls specifically, their kicks were about this high. And next year, they were about this high. Wow. And as the years go on, they went up, and now the high kicks are सीधे ऊपर. So I think that breaking of that inhibition. मैं अपनी fitness को लेके conscious हो रही हूँ because मैं compare कर रही हूँ. So now अब क्या हो रहा है कि जब now we have people from, for example, LGS Paragon की लड़कियाँ आती हैं to लोधरा for sport tournaments. And जो हमारे local बच्चे हैं उनके माँ बाप दोनों आते हैं, पूरा खानदान आते हैं, मामू चाचे सब आते हैं देखने to see these young girls in their sports uniforms perform against teams from Lahore. This is a huge change for places like South Punjab, especially places like Lodhra. अच्छा अली, अभी आपने बात की कि इट टुक टाइम वो वॉल्स टेयर डाउन करना, एक जितना गार्ड अप होता है इस तरह के शहरों में, स्पेशली इन बच्चियों का कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता. बट व्हाट डू यू थिंक इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट इज़ फेस्ड बाय, सपोज वी टॉक अबाउट विमेंस क्रिकेट इन पाकिस्तान, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त क्या है? क्यों ग्रोथ उस तरह से नहीं हो रही है जिस तरह से बाकी दुनिया में क्रिकेट की हो रही है? See, asking a man what the issues a girl is facing, obviously, I'm not going to give you a good answer, but structurally, I feel that you can't really grow women's cricket unless you have a pathway system. अब भी आप क्या होता है, 3-4 टीमें बन जाती हैं, टूर्नामेंट कर लेते हो once a year, twice a year, उनको बाहर भेज दो एक टूर के लिए. मतलब I feel this is more of a token thing कि आप टॉप लेवल पे चीज़ें कर रहे हो, ग्रास रूट पे क्या करें? लड़कियों का स्कूल क्रिकेट हो रहा है, लड़कियों की अकेडमीज बन रही हैं. Even for example domestic cricket, अभी जब in the last 3 years there was a system where there were 6 cricket associations. उसमें से एक South Punjab था which I was running. Yeah. Even then in the first time they presented this, I got up and asked कि यार where's women's cricket? Why doesn't every cricket association have a women's team? And they said, oh actually it's because हमारा pool इतना छोटा है कि we can't get 6 teams. Yeah, that's crazy. हमने मुल्तान में हमने टूर्नामेंट कराए थे. We were starting cricket clubs in Lodha. In one day 500 girls applied to be in those teams just from Multan. And the PCB is saying कि पूरे पाकिस्तान में 6 टीमें नहीं बन सकती. क्या कह रहे हैं? So unless there's a system at domestic level where girls can go regularly play in the academy at least a couple times a week, then they have a domestic team where they're playing at that level, then they move up to the district level, and then they move to the regional level, first class level, and so on. So we have to have a pathway system, not just token tournaments every now and then. Token tournaments ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है. अभी कुछ महीने पहले पाकिस्तान जूनियर लीग के नाम से एक लीग हुई थी जिसमें पूरे पाकिस्तान से जो यंग टैलेंट है लड़कों का उनको मौका मिला था. और जो पाथवे की आपने बात की, बहुत सारी लड़कियां भी हिस्सा थी पाथवे प्रोग्राम का जो क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया था. तो इतनी लड़कियां आई और वही एज ग्रुप क्रिकेट की लड़कियां, और मैं सबसे मिली, बहुत बातचीत की, इवन उनको ड्रिल्स हमने कराए ग्राउंड में, हमने उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी. लाला वाज देयर, ये सब थे. इवन तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, लेकिन बहुत सारी लड़कियों ने ये सवाल मेरे से किया कि जो भी फॉरेन कोचेस आते हैं उनको ट्रेन करने के लिए, उनको ज़ाहिर है इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं. एक तो कम्युनिकेशन बैरियर बहुत मेजर है. आई एम श्योर ये आप भी फेस करते होंगे, नॉट जस्ट विद विमेंस क्रिकेट बट ऑल्सो विद मेंस क्रिकेट, कि जब बाहर से कोई कोच आ रहा है, ही हैज़ हिज ओन आइडियोलॉजीज, हिज ओन वैल्यूज़, हिज ओन लिंग्विस्टिक स्किल्स, प्रेफरेंसेस, कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं. ये बैरियर आप कैसे करते हैं? सो जब भी हम अपने अकेडमी में करते हैं, गोरे कोच आते रहते हैं रेगुलरली. जॉन्टी रोड्स आया था फॉर एग्जांपल फॉर फील्डिंग कैंप, आजकल जूलियन वुड आया हुआ है फॉर पावर हिटिंग कैंप, इयन पॉन्ट आया था फास्ट बॉलिंग. सो वी गेट दीस पीपल ऑल द टाइम. I've never seen any issues between communication wise between the I think players this and is them. a major difference between men's and women's cricket because लड़कियाँ आई बिलीव बहुत शाई इस चीज़ में होती हैं, ब्रेकिंग द फर्स्ट वो, बिकॉज उन्होंने लिटरली आके मुझसे पूछा कि ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये मुझे बता क्या रहे हैं. बट द क्वेश्चन इज कि सो एग्जांपल जब हम बुलाते हैं ऐसे कोचेस को, हमारी मेन कोशिश होती है कि उस कोच के साथ हम 3-4 अपने कोच लगाते हैं. सो ही इज टीचिंग द प्लेयर्स डायरेक्टली, kind of with the coaches being there to supervise and to help and translate. And once that coach is gone, those 4 players are still there, the 4 coaches. वो सिखाते रहेंगे. I feel जब ये होता है ना कि एक बहुत पैसे खर्च करके किसी को बुला लिया और हमने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा लिया, अच्छा when he leaves next उसके अगले दिन क्या होगा? Will they continue? Who is continuing Sustainable it? Who's supervising it? Otherwise it's a token thing, ना? So you have to have a system जहाँ आपके girls, you have academies across Pakistan. Again, you don't have to start कि जी हम we'll only start when we can do everything. जहाँ आपके NHPC है, आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर हैं, where are the girls' days?
Why can't you But allocate Ali, number ये भी of तो सिर्फ days for girls? ये जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स आपने जिनकी बात की, आइडेंटिफाई की, ये सारे बड़े शहरों में है ना। जो सबसे जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, एटलीस्ट टू मी, जो लड़कियां मुझे पूछती हैं सोशल मीडिया पे जब मिलती हैं, नॉट जस्ट लड़कियां, इवन पेरेंट्स वगैरह, कि हमारी बेटी को शौक है खेलने का, लेकिन कहाँ पे खेले, कहाँ पे जाके। Absolutely. ये जो एक ग्रास रूट की आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है कि नहीं है कोई स्ट्रक्चर और अवेयरनेस नहीं है, ये पाथवे कैसे क्रिएट So for करना है? example, हमने जब मुल्तान में करे थे ना वो cricket leagues है वो, तो the first thing we did was the girls complained to us कि हमें nets पे मौका नहीं मिलता because the boys are there all the time और हमें बारी देते नहीं है. So the first thing we did was कि जो लड़कियों का हॉस्टल था ना उसके सामने ग्राउंड था खाली, हमने उस पे नेट बना दिया. ठीक है. And because just हमने को और कुछ नहीं किया, just net and some bat ball equipment हमने रख लिया, pad sheds. When we went, they had been playing regularly on that in those nets every day almost. Wow. So after a month, they were completely different caliber of players. They're playing every day. You don't have to make a whole center for it. आप देखो कि कहाँ मैं उनको एक सिक्योर प्राइवेट जगह में नेट बना के दे सकते हैं. स्कूल से बात करें, कोई डिपार्टमेंट से बात करें. आगे आप डिपार्टमेंट क्रिकेट की तरफ जा रहे हैं, आप उनको इनकरेज करेंगे. You have to have a women's team. आई थिंक स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस को तो आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं. इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसके बगैर स्कूल्स आर द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सोशलाइजेशन ग्रोइंग अप. मैंने जब क्रिकेट शुरू की थी, मुझे नहीं पता था कि ट्रायल्स हो रहे हैं. मेरे स्कूल में ब्रोशर्स आए, मैंने देखा, मैं ट्रायल पे गई, एक रूट बन गया ना, कनेक्शन बन गया. और जो लड़कियां ख़ास तौर पे वो जो इन शहरों से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, आई थिंक स्कूल्स और कॉलेजेस का बहुत बड़ा रोल है जिसको हम नहीं स्कूल क्रिकेट तो हमारे बॉयज़ के लिए भी नहीं है. तो स्कूल क्रिकेट ऑन इट्स ओन वी हैव टू डेवलप, बट देयर हैज़ टू बी, व्हेनेवर योर पीसीबी टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक क्रिकेट, दे हैव टू हैव वुमेन एज पार्ट ऑफ इट. कि डिपार्टमेंट टीम बन रही है, ग्रेट, एवरी डिपार्टमेंट हैज़ टू हैव वुमेन्स टीम. रीजन्स बना रहे हैं, दैट्स ग्रेट, एवरी रीजन हैज़ टू हैव वुमेन्स टीम. अनलेस यू ऐड वुमेन टू एवरी एस्पेक्ट, बनेगा कुछ नहीं. वही बात है ना, टोकन टूर्नामेंट्स ही हम देख रहे हैं. एंड वी रियली होप, सिंसियरली होप कि जिस तरह अभी पीएसएल के एग्जीबिशन मैचेस हुए, ग्रेट, बट not a big fan of the frequency of those matches. And you know, वही है कि Women's Day पे हमने एक मैच कराया था. A match at this stage with foreign players, TV, this is the final step. भाई पहले 5 स्टेप है वो किधर है? Yeah. ये बिल्कुल एक बहुत मेजर इशू है. अली, इसके अलावा अंडर रिप्रेजेंटेड जो सिटीज़ हैं साउथ पंजाब की, और क्या चैलेंजेस ऐसे हैं जो वहाँ के क्रिकेटर्स, मेन एंड वुमेन क्रिकेटर्स, जो फेस करते हैं, जिनको बहुत ज़रूरी है आइडेंटिफाई करना और करेक्ट करना? देखो, so many issues when it comes to cricket इस देहात के इलाकों में. एक तो ग्राउंड नहीं होता, तो कहाँ खेलेंगे, पहली बात हुई है. दूसरा ये होता है कि इक्विपमेंट नहीं होती. तो मोस्ट ऑफ पीपल माई अकेडमी आई हैव टू गेट देम स्पाइक्स मिलते नहीं पाकिस्तान में अच्छे. तो मेजॉरिटी पीपल बैट, स्पाइक्स, तो आप अरेंज करते हैं पर्सनली उनके लिए? तो वो कहाँ से लेंगे? आई कैन बाय स्पाइक्स हियर, तो वो कहाँ से लेंगे? तो जूते आ रहे होते हैं, बैट्स आ रहे होते हैं, इक्विपमेंट आ रहा होता है, थाई गार्ड्स आ रहे होते हैं, नो वन हैज थाई गार्ड्स. तो सो मेनी थिंग्स दैट दीज बेसिक इक्विपमेंट उनके पास अवेलेबल नहीं होता. दैट्स व्हाई टेप बॉल इज सो पॉपुलर. आप यू नीड नथिंग फॉर टेप बॉल. बैट लो, बॉल लो, बस काम शुरू. सो अगर हार्ड बॉल पर फोकस करना, यू हैव टू हैव प्लेसेस जहाँ लोग रेगुलरली आके अच्छी क्वालिटी की क्रिकेट खेल सकते हैं. एंड अब काफ़ी ये होता है कि अगर 100 बच्चे आ रहे हैं ना, उनमें 100 में से कितने जाएंगे आगे टू नेक्स्ट लेवल? फॉरगेट फर्स्ट क्लास और नेशनल टीम, उस लेवल से आगे कितना जाएंगे, क्लब से आगे 1-2, बाकी कहाँ जा रहे हैं? सो हमने ये कोशिश की कि हमने वी स्टार्ट प्रोग्राम्स ऑफ टीचिंग पीपल अबाउट रेफरी बन सकते हैं आप, अंपायर बन सकते हैं आप, स्कोरर बन सकते हैं आप, ग्राउंडर बन सकते हैं आप. कोई तो मनी, कोई इनकम हैज़ टू बी कमिंग इन. बिकॉज ये होता है, इफ यू नॉट इनकम इजंट कमिंग इन, देन द माँ बाप इवेंचुअली कहते हैं देखो बहुत हमें टाइम दे दिया, अब मजदूरी का काम करें, आप क्रिकेट छोड़ दें. सो मच टैलेंट हैज़ बीन लॉस्ट टू दिस. तो वही बात है ना कि आपने प्रोवाइड, एंड इट्स ग्रेट कि आपकी फाउंडेशन ने, आपकी एकेडमी ने ये चीज़ प्रोवाइड की है. बट अली, टॉक अबाउट, यू नो, आप इतने टूर्स कराए होंगे विद दीज यंग प्लेयर्स, आप उनको लेके जाते हैं लोकली भी, इंटरनेशनली भी. Any fond memory that comes to your mind? Because I'm sure traveling with a bunch of young kids who haven't seen much of the world, much of the country. बहुत उनके लिए तो गेम चेंजर होता है. Just going abroad, traveling, you know, living with people, देखना कि बाहर कैसी चीज़ें हो रही होती हैं क्रिकेट के अलावा भी. जैसे लाइफस्टाइल वाली बात, इट्स अ ह्यूज चेंज. तो आई हैव सीन मेनी पीपल हु हैव गॉन एज वेरी शाय, क्वाइट, चुपचाप टाइप लोग, एंड दे कम बैक फ्रॉम, यू नो, द टूर वी टेक देम टू द यूएस और द यूके, दे कम बैक कंप्लीटली डिफरेंट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, यू नो, जस्ट men. So these kind of tours at an early age is a huge thing for the grooming of professional players. And what do you do for fun when you're out with these young players? बस बताएं. मैं वैसे बता दूं कि one of our players fell in love with a waitress.
तो वो तो था कि बस मैं यही रह रहा हूँ. Now like, yeah, this is illegal, yeah. Were you a good wingman or not? I was not because the player was under 18. I was like, bro, वो जेल जाएगी. Waitress under 18 थी या वो? नहीं, वो under 18 था. Waitress बड़ी थी, उसको लव हो गया and he wanted to marry her. तो मैं कहा, bro, this is illegal, वो जेल जाएगी. आप प्लीज इससे रिश्ता ना मांगना. तो सुपरवाइज करना पड़ा. I'm sure that must have been very tricky for you to navigate. But इस तरह की चीज़ें यही तो you know when you're in that age. तो स्टेसी से सारी होम सिकनेस भूल गई उसको. That's such a cute story. But Ali, you know, you've talked about women's cricket so much, and you know, हम आपके initiatives देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. Not just cricket, by the way, women's education में भी आपने बहुत काम किया है. And आपने एक बार mention किया था एक interview में कि you would like to, you know, make a production जिसमें you know you're telling a story of a young girl who wants to play cricket. तो I want to ask you कि मैं कहाँ audition करूँ? अभी तो अभी तक काम नहीं किया, लेकिन I heard by the way someone is making this kind of story. Yeah. I saw an ad अभी posted recently, तो about time, right? Yeah. I think just highlighting, I think जो even within Pakistan ना कि especially social media पे so many of these trolls trolling women for having you know liberal opinions या कोई बात करते हैं उनको troll कर रहे होते हैं. So obviously you have unfortunately gone through this. I think it's when you start showing the women's perspective कि these are the hardships I have to deal with that you have never even thought about, you know, random man. Yeah. So I think once you show that ना, that really makes them understand कि यार oh I never thought that this is an issue for a girl. ये So I think you have to पर्सपेक्टिव show it. हाँ. और हमारे ड्रामाज में हमारी मूवीज़ में अब तो हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी इट्स ऑन अ यू नो एक टाइड पे है और एक टाइड टर्न हो रही है. बट ये स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है. मतलब मेरे लिए भी वही आपसे बात की ना कि क्या चैलेंजेस होते हैं फॉर यंग गर्ल प्लेइंग क्रिकेट. I would love to see a story about a young girl trying to convince her family, trying to not just convince her family but convince the society कि this is a path for me, ये मैं professionally कर सकती हूँ. और even just the most basic things like मेरी हाइट की लड़की जो है वो फुल लेंथ बॉल नहीं करा पा रही है, क्यों नहीं करा पा रही है. यू नो आपने जिस तरह बात की यू नो एक आपका भी चैलेंज ये आया था. इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो लड़कियों को फेस करने पड़ते हैं. Even at micro level यार, think about कि अगर academy is you know 5 kilometers away, how is she getting there? How is she getting there? पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, कौन साथ बैठा हुआ है, कौन लेके जा रहा है, शैपरोन है नहीं है, अब वहाँ जा रही है नेट्स पे, वहाँ कैसा सलूक है उसके साथ. गर्मी में खेल रही है, काली हो जाएगी, ये तो इतना सुनती हैं लड़कियाँ. प्रॉब्लम व्हाट इफ द कोच हैज नेवर बीन ट्रेन्ड ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन, व्हाट द कोच डजंट नो व्हाट्स अप्रोप्रिएट व्हाट्स नॉट अप्रोप्रिएट. ऐसी चीजें होती हैं यार. दिस इज अ ह्यूज इशू दैट अ बॉय हैज नेवर थॉट अबाउट. Yeah, you're right. It's just a completely different thing, and I really want to show that these are the issues in cricket nazar aayega, but this is in every aspect. Yeah. A girl who wants to be professional, you know, in work in office, same issues. So some girl wants to get educated in a गाँव, same issues. Professor कैसे है, teacher कैसे है, principal कैसे है, हर फील्ड में. हर फील्ड में होगा. So that's why I just wanted to use that as an example to show everyone that these are the issues women face every single day. Dodos, men are dodos. But Ali, or what does your day look like if you're not working, if you're not traveling, cricket नहीं हो रही, off day पे क्या कर रहे होते हैं? So सुबह सवेरे ना, I just want to maximize time with my 2 daughters. Okay. Amar and Leila. So I just try to spend as much time as I can with them. और बीवी भी होती है, but mainly और बीवी भी होती है. After thought है बीवी. I hope you're watching this. I love Bia, ऐसे ना कहो. I love Bia, but obviously my main thing is to hang out with my girls. Naturally, so, yeah. Very proud girl dad. So as much time I can get with them, you know, I try to get. And then with them, with the family, we try to be very spontaneous. So बैठे होते हैं, we'll be all in a night shoots कि you know, चलो जी let's go out and you know get pancakes. चलो let's go and get you know burgers. कोई भी चीज़ लेते हैं. Franchise cricket. इतनी growth हुई है in the last 5-6 years in Pakistan, all over the world. इतनी leagues हैं जो कि you know that have sprouted up. Being in the franchise game. For people who manage the franchise world, उनके लिए तो खैर there is so much craziness happening. But as a player, because आप young players के development के साथ काम करते हैं और young players के लिए franchise cricket एक बहुत lucrative भी एक चीज़ है. But at the same time, it also presents a conflict at times, especially domestic cricket के साथ जो आपकी local हो रही होती है. Where do you stand on this debate के domestic cricket versus franchise experience? What is good, what is better for a player in that age group? So before talk about this, एक regarding the दुनिया में हो रहा है ना franchise cricket वाले से मुझे बहुत डर लगा हुआ है, because PSL we had a really good window before the IPL. प्लेयर आते थे, एक तो हम दुबई में खेलते थे पहले, players would love it, अच्छा मौसम होता था, good timing.
उससे पहले होते थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग दिसंबर में, फिर हम, फिर IPL. Yeah. अब क्या हो रहा है, ILT20 आ गई है in UAE. So the UAE experience that players would get from PSL, अब वो ILT20 कर रहा है. Now Saudi Arabia is making league. Yes. अब Saudi Arabia लीग करेगा किस टाइम करेगा? IL20 के बाद before They PSL करेगा ना? don't Winter really में have करेगा. वही ना. Has to be in the winter, right? Yeah. It can't be in the IL20 time. Has to be after it. Yeah. Before तो unlikely है. Before तो वैसे बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो रही होती है, बाकी चीज़ बिग बैश भी हो रहा होता है. टाइम ही नहीं है ना वो. So the only way I feel is going to come in is in between ILT20 and वो IPL. And what tournament happens then? PSL. PSL. So if you have more lucrative contracts there, and especially most likely going to be India dominated, the way they're talking to the IPL now, तो उन्होंने तो IL20 भी वो dominate करते हैं, सऊदी भी dominate करेंगे, IPL तो उनका वैसे अपना है, साउथ अफ्रीका भी उनका है. Yeah. अब US भी नया शुरू हो रहा है, PSL की जगह कहाँ होगी? दिल में हमारे. So this is I'm very worried about this. We're all worried अली. और हम आप सोचें एज अ प्लेयर तो ये बहुत अच्छे मौके हैं ना to earn good money, to have that exposure, quick exposure. Of course हर तरह का उनको lucrative package मिलता है. But again coming to the point कि domestic cricket की क्या वही value आज है जो कि आज से 20-25 साल पहले थी? I think it depends on the structure itself. अभी जब 6 टीमें थी in the last 3 years, it had very high value because it was a very, very competitive game and a very, very competitive tournament. तो जो players वहाँ perform करते थे वो ही जाते थे पाकिस्तान टीम में और वो ही जाते थे in PSL teams. For example, Mohammad Rizwan had an amazing campaign at KPK as an opener. उसी time he got picked in PSL as an opener and did so well. अगर वो domestic में ना दिखाता कि I'm such a good opener, maybe he wouldn't get picked. Similarly, 𝐓𝐡𝐞 had an amazing tournament with Southern Punjab, did so well, got picked in Multan, Sultans, became the player of the tournament there, and then made the national team. So when you have a high quality tournament where everyone is watching, it becomes relevant. अगर अब हम वापस चले गए to the departments and regions जहाँ 18 टीमें हैं और departments में again mostly old players playing, no young players playing, if the quality is low, it won't be as important. So domestic cricket is important for sure, but it's doubly important when it's a high level competition where people can use it as a base for selection in the future. If you can't use it as a base, so then it's not Do as you important. think कि ये shift हो रहा है पाकिस्तान के अंदर ये criteria अब because अब PSL has become that league जिसके base पे you win a national call up and Yes. domestic is there but it's more of a platform जहाँ पे a player when he gets dropped he can come back work so, on his वो. look at Abrar. Abrar कहाँ से आया पाकिस्तान टीम में? Domestic. Yeah. Where did Muhammad Ali come from? Daisy. Domestic. But ये बड़े singular Red examples ball है हैं ना? but हाँ, yeah. Red ball. So they were red ball players, so that's how they came in. Yeah. But overall if you see for example हम Osama Mir कहाँ से आया? Domestic. So domestic, if you perform in a high level competition, you will get selected. But is it fair to give slack to a player if he chooses to go another route? For example, Azam Khan. He's very unapologetic about the route that he takes for his development because उसने ये कहा हुआ है हमारे podcast पे आए थे and he said कि मेरी बेहतरी के लिए और मेरी गेम डेवलपमेंट के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं वो करूँगा rather than what my father did or what other people are doing. And rightly so because look at his form right now. He is playing in all the leagues around the world. He's getting that experience. Yeah. He's getting runs off his bat. अब वो 15 balls पे 35-30 करके अगर आपको वो की इनपुट दे रहा है टीम में तो आपको फिटनेस और आपको ये सब चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है नो डाउट बट फ्रेंचाइज क्रिकेट का बहुत बड़ा रोल है. तो जब आप आज़म खान का मैं खाली एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे प्लेयर को जब आप लोग गालियाँ देते हैं कि भाई तुम बाहर जाके खेल रहे हो तुम्हारा अपना डोमेस्टिक तुम नहीं लोग भी नहीं हमारा मीडिया हमारे काफ़ी लोग हैं जो बात करते हैं इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है? So with the Azam Khan case, obviously he was in Southern Punjab, so I know this case very well. जब नेशनल T20 हो रहा था उसके फ़ौरन बाद वर्ल्ड कप था तो all the players were extra motivated to play in that T20 national T20 because उनको पता था कि अगर हमने कोई कमाल परफॉर्मेंस कर दी ना हमारा नाम आ सकता है इन द वर्ल्ड कप टीम. Azam Khan already had a deal with a CPL team and he decided to go there because obviously CPL obviously is more fun than playing national T20. कोई शक इस बारे में नहीं है. तो if you choose कि this is a more fun tournament, obviously international tournament है, TV televised होता है, but even though he played well there, did he get in the World Cup team? No, he didn't. But the people who performed well in the national T20, did they get called up the World Cup? Yes, they did. So you have to see कि अच्छा what is going to help me in my career and what is your goal for the career. Is your goal to be on the circuit and be well paid and travel the world? If that is, that's great. मतलब कोई बुरी बात नहीं है. But that's your choice. कि I want to be the guy who's going around Dre Russ type कि I'm in different leagues और मैं मजे कर रहा हूँ. That's fine. But if your goal is I want to be the Pakistan team and I want to be in the Pakistan team for the next 20 years, you take a different route.
Just it depends on what you नहीं, want. but do you think कि फिर players like Azam who choose to go to the franchise route, do you think कि You can उनका do both. goal It's नहीं about है? timing. If he had played, I feel if he had played the national T20 that year, which was Because he said he was depressed when he was dropped from the World Cup squad. तो वो उसके बाद, I'm talking about the year afterwards. Yeah, yeah. How if he's depressed, then I have been dumped from the World Cup squad. Why are you not 100% focused on being back in the squad? The only way to be back in the squad, and everyone knew this, every player knew this, कि ये national 20 के फौरन बाद वर्ल्ड कप है हमारा. और अगर हमने इस पे परफॉर्म किया, and what were we looking for? A middle order hitter. yeah. A middle order hitter, especially against spin. तो हमारे जो ट्रैक्स भी थे नेशनल T20 में इस साल में, they were all spinners. People were playing 3 spinners in every game. अगर उस टूर्नामेंट में आजम खान होता playing against 3 spinners in the middle और वो पटाखे मारता, Yeah. तो वो तो टीम में होता for sure. But CPL खेला, वहाँ भी अच्छा परफॉर्म किया, but are the selectors looking at that, looking at national T20? National T20 Should that they year. be looking at that? At that year for sure. At that time, when everyone is playing that, you're looking at that. But franchise cricket का भी role है अब selection में. Do you think? Definitely. I think role है उनका. They're looking at stats, but of all the 6 selectors were the 6 coaches of the national 20. We had no selector in the CPL. Yeah. वो वहीं खेल रहे हैं, रोज देख रहे हैं और उसी प्लेयर को recommend करना है. And specifically, every coach was told, आप हमें number 4, number 5 के players है ना, हमें identify करके दें. So if we had Azam Khan, हम तो उसको identify करते. बिल्कुल. और फिर वहाँ के नाम जाता उसका. So you make your own decisions. चलें to You each can do. their own. And I still feel that you should do both, but you have to be smart about your timing for when you're doing what. अच्छा अली, पावर हिटिंग की भी आपने बात की. ये बड़ा एक बज़ वर्ड है आजकल T20 क्रिकेट के अंदर. बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट, मोर रीज़न फॉर टीम्स टू लुक फॉर एंड टू स्काउट पावर हिटर्स इन द टीम. अब जुलियन वुड एक पावर हिटिंग कोच भी हैं. ही हैज़ ट्रेन सो मेनी यंग प्लेयर्स. आपके साथ भी वो काम कर रहे हैं. बहुत सारे लोगों ने ये क्रिटिसिज्म भी किया है कि आप इस एज में बच्चों को पावर हिटिंग सिखा रहे हो. उनको लगता है पावर हिटिंग है वो स्लॉगिंग है, और आप इस एज में बच्चों को वो सिखा रहे हो तो उनकी टेक्निकली आप उनको जो है वो मिसलीड कर रहे हो. हाउ मच डू यू एग्री विद दैट, और कैसे आप ये बैलेंस रखते हैं बिटवीन पावर हिटिंग एंड बीइंग टेक्निकली साउंड? So the way Julian Ward teaches power hitting is you need to be technically sound. The way he's looking at batter, he's lining up. कैसे ये shot मारो. He's looking, assessing everyone. He would go to everyone and say, listen, तुम्हारे technically, you need to align your body together. Abhi, for example, he was working on one player कि your lower body is facing that way, your upper half is facing that way. एक को उसने कहा कि your bat flow, when you go up, your hands don't go back enough to get a full bat swing. तो इसलिए आप फंस जाते हैं. You push the ball more and you're not able to really hit it properly. कोई बंदा था who was moving his bat behind his body a bit. So then he could only go around and he couldn't hit these shots. Yeah. So power hitting का main मकसद ये है कि everything has to be in line. All your technique needs to be immaculate ताकि all your energy can go towards the ball. तो टेक्निकली हम उनको बेहतर करना चाह रहे हैं. इट्स नॉट वी नॉट सेइंग टेक्निक छोड़ो अब कस के मारो. वी आर सेइंग व्हेन योर टेक्निक इज गुड एंड यू हैव अ प्रॉपर बैट फ्लो और योर बॉडी इज अलाइन्ड, यू हैव द एंगल्स मेंटेन, दैट्स व्हेन यू कैन डू अ प्रॉपर शॉट एंड दैट विल गिव यू द मैक्सिमम चांसेस ऑफ क्लियरिंग द रोप एंड नॉट गेटिंग कॉट इन द बाउंड्री. तो वो तो बात ही टेक्निकल कर रहे हैं. आई टेल यू one thing that we talked about अभी at the camp, it was the day one. और we had different stations, drills भी कर रहे थे, चीज़ें कर रहे थे. एक जगह नेट्स हो रहे थे और people were batting. तो वहाँ ना जूलियन रियलाइज कि everyone is batting ना very safe. टिप, गुड शॉट, सीधी. हम तो पावर हिटिंग करा रहे हैं. सो वी आर नॉट सेइंग कि खेलो ऐसे. वी आर सेइंग व्हेन वी आर डूइंग दीज ड्रिल्स कि आपको हम दिखा रहे हैं कि आपने ऐसे स्विंग करना है, तो व्हेन यू गेट इन द नेट अब वही प्रैक्टिस करो ना. बिकॉज ट्रायल्स तो नहीं हो रहे. वी आर हियर फॉर 7 days. So whatever you're trying in the drills, we try to implement that in the nets. This is what he was trying to make. Fear of failure भी बहुत ज़्यादा. failure भी नहीं है. So they weren't doing it. Obviously, उसको कहता है it takes time, but ये थोड़े slow हैं. मुझे कह रहा था. And I explained to him, मैं कहा Julian, you have to understand. Whenever these players have ever been in a situation कि वो नेट्स में बैटिंग कर रहे हैं और कोचेस देख रहे हैं, वो कब होता है सिचुएशन? एट अ ट्रायल. जब ट्रायल हो रहा होता है ना, दे मेकिंग द कोचेस हैप्पी. दे नॉट ट्राइंग टू learn something in the nets. He's trying to impress the coach. अब अक्सर हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि कोई प्लेयर अगर नेट्स में ना वॉक डाउन करके शॉट मारेगा ना या रिवर्स करेगा इन द नेट्स, उसी वक्त कोच आएगा कि आउट, इसको तो निकालो फ्रॉम द नेट. सो we're so keen on discipline कि I explained to Julian कि they're not going to try power hitting in the nets because this is what they used to. We have to आहिस्ता make them break out of this कि यार नेट्स पे चीज़ें ट्राई तो करो. मैच हो रहा है, ऑब्वियसली चीज़ें ट्राई तो ना करो, वो जो आता है वो करो, पर हम जब एक 7 day का कैंप कर रहे हैं, गोरा आया हुआ है, तो जो वो सिखा रहा है वो तो ट्राई करो. बट दे वुडंट डू इट बिकॉज दे वर सो यूज्ड टू दिस कि अगर हमने कोई फैंसी शॉट मारी, हमें पहले उसी वक्त नेट से निकाल देंगे. तो देन आई सेड दिस टू द प्लेयर्स, वी हैड अ डिनर आफ्टरवर्ड्स, एवरीवन एग्रीड कि एग्जैक्टली ये होता है. एंड पीपल स्टार्ट शेयरिंग स्टोरीज के उस दिन मैं था, वो
ऑफ वोटिंग कोचेज नेम, मैंने एक वो किया, आगे निकल के मैंने छक्का मार दिया स्पिनर को, उसी वक्त कोच ने आके कहते इसको निकालो, और उसने कह दिया अगले मैच में हमारा नाम काटती है मैंने, ये क्या करे हो तुम? सो इज इट अ सरप्राइज दैट द ओनली बैटर वी कांट डेवलप इज अ पावर हिटर? बिकॉज इन द नेट्स ऑल आवर कोचेस सेइंग देखो गुड शॉट, ठीक है गुड शॉट भी मारो, लेकिन पावर हिटिंग भी कराओ. Because in no net in Pakistan, in any trial or any team, are people being encouraged to try new shots. Yeah. बाहर के मुल्कों में देखो वीडियोस देखो, everyone's trying flicks, everyone कोई 10 बॉल पे इकट्ठे फ्लिक करेंगे, because they're trying to practice that shot. Surya Kumar Yadav is like the biggest example. Exactly. तो वो you think he's not practicing that in the nets? Invent करते हैं वो तो हर मैच. Where is he inventing them? In the nets ना? Yeah, exactly. मैच में इन्वेंट नहीं करता, नेट में करते. हमारे नेट्स में अगर कोई ऐसी चीज़ करेगा कि इसको निकालो, this guy is out. और जब मैच में अक्सर ये होता है कि जब मैच हो रहा होता है, प्रैक्टिस मैच हो रहा है या कोई क्लब मैच हो रहा है, समवन गेट्स आउट ऑन स्कूप करने की कोशिश कर रहा है, वो बोल्ड हो गया, लेट्स से ही जस्ट लॉस्ट बैलेंस, दैट गाय वोंट बी सेड कि गुड एफर्ट कि तुमने इंटरेस्टिंग चीज़ ट्राई की, पहला उल्लू के पट्टे, इसको तो नाम निकालो, खेला नहीं आता. बिल्कुल मुझे बदनाम करे बिकॉज द पीपल जो हमारे कोचेज हैं वो बेचारे बूमर्स हैं, तो बूम इज गोना बूम. डू यू एग्री कि ये चीज़ एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है? हर चीज़ इतनी बाय द बुक होती है कि जहाँ पे एक बच्चे ने थोड़ा सा हट के आउट ऑफ द बॉक्स कोई इनोवेशन करने की कोशिश की, उसको डिस्करेज किया जाता है, उसको एक बॉक्स में रखने की, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी चीज़ में भी लाइफ में, यू कांट डेयर टू डू समथिंग दैट इज़ डिफरेंट एंड इनोवेटिव एंड इट माइट हेल्प यू लर्न अ थिंग और टू, बिकॉज वो एक फियर ऑफ डिसिप्लिन, जैसे आपने कहा, हमने व्हाट यू टीचिंग देम थ्रू आउट देयर लाइफ, तो वही करेंगे. एवरी टीचर देखो तुमने कोई अनऑथराइज्ड शॉट नहीं खेलनी, हाँ, तो नहीं खेलेंगे. तो जब नेशनल टीम में आ गए हैं, वी ऑल हैव दीज टॉप ऑर्डर बैटर्स, मिडिल ऑर्डर हमारे पास भी है ही नहीं, एंड देन वी से हमारे हिटर क्यों नहीं बन रहे? इसलिए नहीं बन रहे यार, यू आर डिस्करेजिंग प्लेयर्स फ्रॉम डे वन. अच्छा अली, अभी you've talked about all these young players जिनको आप ट्रेन करते हैं बहुत से, एंड आई एम श्योर यू हैव सो मेनी एक्सपीरियंसेस इंटरेक्टिंग विद देम, आपकी खुद भी बड़ी लर्निंग्स होती होंगी, एंड व्हाट इज़ गोइंग थ्रू देयर माइंड्स राइट नाउ, बिकॉज इस जनरेशन के क्रिकेटर्स के जो रोल मॉडल्स हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है. कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको ये लोग बहुत लुक अप टू करते हैं, और हु आर द हीरोज ऑफ दीज यंग किड्स? I think the most loved player, there's some players obviously mixed होते हैं, different चीज़ें होती हैं, but there's one guy who everyone I've ever spoken about in cricket loves, adores, respects, मतलब worships the ground he walks on, and that is Mohammad Rizwan. Yeah. People who have played with him in the same team, in the same dugout, adore him. They're ready to die for him. So Abhi bhi, so Amir Azmat is one of my favorite batters in Pakistan. He was in Multan previous season. He loves Rizwan. मतलब I can't tell you how much he loves him. उसके बैट से खेलते हैं. Cute. मोहम्मद रिजवान का बैट है मेरा. Cute. Ilyas was a bowler. He says there's no one gives you more confidence as a bowler जो कीपर खड़ा होता है ना than Mohammad Rizwan. Good times, bad times, he's just the best. So if there any guy who's like who I've heard from national, obviously Babar Azam तो obviously legend है, सब चीजें हैं. But the guy who I've coincidentally because Multan में है, he is the guy people love the most. अली, ये जो यंग प्लेयर्स हैं इनको आप ज़ाहिर है क्रिकेट में तो ट्रेन कर ही रही हो, बट ऑफ द फील्ड भी बहुत सारे स्किल्स हैं जो एक मॉडर्न क्रिकेटर को रिक्वायर्ड होते हैं. हाउ डू यू एड्रेस दो स्किल्स एंड कैसे आप उनको ट्रेन कर रहे हो? फॉर एग्जांपल मीडिया इंटरेक्शंस एंड सोशल मीडिया एंड गर्ल्स एंड स्टफ लाइक दैट. सारी गेम एक्सपोजर की यू हैव टू. फॉर एग्जांपल जब हम टूर्नामेंट्स खिलाते हैं, वी ट्राई टू गेट देम टू प्ले टेलीवाइज्ड टूर्नामेंट्स इन अंडर लाइट्स. एक्सपोजर की बात है. There's no way we can train them unless we give them that exposure. Similarly, media time, we start making content for them early on. तो आजकल भी हम पावर हिटिंग कैंप कर रहे हैं, सारे प्लेयर्स का हमने इंटरव्यू किया, alone, one-on-one, mic, shike, everything set up. Love that. Practice and exposure. बाहर लेके गए, they got to play with different kind of teams, different kind of pitches, different kind of environment, different kind of food, different kind of restaurants. Exposure. Just maximize the kind of exposure you're giving them, and that's how you make a well-rounded player. So that's what we try to do. इस साल मुल्तान की टीम में एक प्लेयर था, अरफात मिन्हास. He was picked from PGL. वो पाथ से प्रोग्राम काफ़ी टाइम से कर रहा है. वही स्टोरी छोटे शहर से, बिग ड्रीम्स और बहुत स्किल्ड है. ही इज़ अ ग्रेट ऑलराउंडर. I don't think he is the next big thing. No doubt. Arafat, obviously, Multani boy, great player. I've been to met his family. छोटा भाई भी उसका बहुत अच्छा खेलता है. वालिद साहब super encouraging, very very invested in his growth in cricket. तो just I'm certain एक दिन पाकिस्तान खेलेगा अरफात इंशाल्लाह. Definitely. और क्या नाम आपके माइंड में आते हैं अगर हमने ये मोमेंट कैप्चर करना हो, फिर आप ट्वीट करेंगे ये वीडियो आज से 5-6 साल बाद, and you'll be like, you know what, रोहा की पॉडकास्ट में मैंने ये बात की थी, I've called it. ऐसे बहुत लोग हैं. People talked about before. एक तो आमिर अजमत, I think I have said before कि after Lala ना, he's a hard hitter, right? The hardest hitter of the ball is Amir Azmat.
अभी कैंप भी कर रहा था. Those are big words, by the way. तो I know the big word, but I feel confident saying them. So even at the camp now, I'll give you an example किस तरह का उसका work ethic क्या है. तो I told them अभी Ramadan tournament finished, we won. I said, okay guys, batting camp हो रहा है, तो I'll invite you guys ये वो. And just for info, this is the coach. नाम उसका लिख दिया. Every day since then, I saw videos of him on Instagram doing the drill that Julian teaches online. And so I knew he went and saw his videos. और अभी से उसके drill शुरू कर दिए. So when he comes, he can maximize the benefit he gains from that coach. मतलब just this kind of mindset कि in North KPK में उसने अपने जूलियन वुड की ड्रिल बना के अपना खुद हैवी बैट बना के टेपें लगा के ही इज डूइंग हिज ड्रिल्स. और जब कैंप पे भी आया था, ही वाज द हार्डेस्ट वर्कर देयर, जस्ट अ स्पंज टेकिंग एवरीथिंग इन. रिमेंबर द नेम आमिर अजमत फॉर श्योर. अनदर bowler who we've started working with recently, again very very raw but amazing talent, is Aminullah from Swat, same गांव as Sanullah. Amazing potential talent, already bowling. Swat side से. हाँ, Swat same उसी गांव में जहाँ Sanullah है. तो अमेजिंग टैलेंट, कम्प्लीटली रॉ, कोई कभी खास कोचिंग नहीं हुई, मिक्स एक्शन भी है उसका, थोड़ा सीधे करें, अभी भी 140 प्लस बॉल कर रहे हैं. सो इफ ही कीप्स वर्किंग हार्ड नाउ, एंड अभी जब वी प्लेड रमजान टूर्नामेंट, दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही एवर प्लेड अ मेजर टूर्नामेंट. completely raw bowler है, but he is unbelievable. So if he keeps training, inshallah, stays injury free, he's going to be one to look out for. And obviously one of my favorite players, Faisal Akram, left arm leg spinner. We've heard that name. Eventually ना उसका टाइम आएगा और फिर बस कभी नहीं छूटेगा उसका टाइम. वेल ये 3 नाम तो खैर हम हमेशा याद रखेंगे, बट इवन लाइक अभी हमारी करंट टीम के अंदर कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपको सबसे ज़्यादा एक्साइट कर रहा है कि इस प्लेयर की ग्रोथ जो है, आई हैव really high hopes, because match winner तो सारे हैं, but who excites you the most as a young player? Everyone in the Pakistan team obviously is very very exciting. हमारी है young team. I think the person who I've loved the most and seeing that journey is Rauf. The way he came in from the PDB program, then played in Big Bash, then came in here. मतलब his story is amazing, and जो personality भी उसकी है इतनी ज़बरदस्त, just amazing to see. Amazing to see him just bowl with that chain around his neck and bowl. I just love it. But you know, a lot of people still give him so much वो एक वो के tape ball background है, जहाँ पे थोड़ी सी उसकी length की, but he's known as, people use it as a negative association, एक connotation देखे ना, जहाँ पे भी उसकी कोई थोड़ी बहुत इधर उधर हुई line और length, तो भाई आ गया ना tape ball का. line length बहुत जरूरी होती है tape ball में यार. These people don't watch tape ball. Line length तो बहुत जरूरी होती है tape ball में. बेचारा वो खैर ही डिजर्व्स ऑब्वियसली जितनी भी सक्सेस को अभी तक मिली है, बट राइटली सो. ये जो स्टोरीज है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, कमिंग फ्रॉम दीज बैकग्राउंड्स एंड टेकिंग यूज ऑफ ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज. बट आई डू फील कि पाकिस्तान क्रिकेट, आई लव देम, बट कई प्लेयर्स हैं जिनका करियर काफ़ी स्टॉल हुआ है बाय बीइंग सिलेक्टेड इन द पीसी इन द नेशनल टीम और बीइंग इन द स्क्वाड एंड दे नॉट प्लेइंग रेगुलरली. अब्दुल शफीक को देखें, how many games did he get after he got selected? Barely played. He missed a whole PSL because of it. He wasn't playing. अब हसनैन भी है, he's been with the team so long. पूरा वर्ल्ड कप साथ खेला था, क्या नेट बॉलिंग कराने गए थे इसको, कोई मैच नहीं मिला उसको, wasn't playing domestic either. And there's so many players who get selected and get fast tracked in the team, but then don't play. एक और नाम दहानी भी देख लें. दहानी. So many players who should be playing domestic cricket regularly to keep in touch, they're just not, and just being net bowlers for the Pakistan team, which I don't think is okay. वेल ये तो खैर बिकॉज वी हैव दिस ह्यूज सरप्लस ऑफ टैलेंट कि ये एटलीस्ट ये प्रॉब्लम जो है हमारी कि हम लोग यूटिलाइज, बेंच स्ट्रेंथ ही इतनी ज़्यादा है, एंड तो बेंच भी डेवलप करो ना. वही है, बेंच इज नॉट टू रिग्रेस, इट शुड आल्सो बी इंप्रूविंग. अभी बेंच पे हैं तो इंप्रूव करेंगे, फिर ना फर्स्ट टीम में आएंगे. जब बेंच पे बिठा के आप रिग्रेस कराते हो फिर तो कभी नहीं आएंगे फर्स्ट टीम में. वही ना, अब जाके थोड़ा सा चेंज आया. अब हमारी पाकिस्तान ए टीम भी अभी टूर पे है, हमारे अंडर 19 भी अभी गए हुए हैं, तो आई थिंक ये एक फाइनली हो रहा है. बट वुमेन्स क्रिकेट का अभी भी एक बहुत बहुत ज़रूरी है टू टेक अ लॉन्ग हार्ड लुक एट वेयर वी आर गोइंग. अभी भी कितने एक्साइटिंग नाम है हमारी टीम में, जिनको मुनीबा अली, आई थिंक शी इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर इन पाकिस्तान राइट नाउ. कि इतनी बड़ी अचीवमेंट आपने यार 100 कर लिया है वर्ल्ड कप के अंदर T20 के, और आपने इतनी आसानी से ये वाले नाम इस तरह के जिन पे हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है. बट वही है कि हमारा टर्नओवर ही इस तरह का है वुमेन्स क्रिकेट का कि हमारी बेंच है ही नहीं, बेंच स्ट्रेंथ नहीं है, बस वही पूल है. नहीं है, there's no structure. आपकी 2-3 टीमें बनी हुई हैं, वो आपस में खेलते रहते हैं, वो तो बजाय उनको तो they just desperate to get games obviously, but where's the pipeline? है नहीं. There is so much that needs people talking about women's PSL, वो आ जाएगा ठीक है, but where's the pipeline? Do you really see that happening realistically? I hope so. I think it can happen. I think it should happen. I obviously will definitely be keeping hopes so हम सब hope कर रहे हैं. When इंशाल्लाह कभी मौका मिला उनसे बात करने इसके बारे में, it becomes when it materializes more, इसके यार आप ये this is the final step. Tell me what's the pipeline? Are we doing a 19 tournament?
where the players coming from? Where are the players coming from? Emerging players कहाँ से आ रहे हैं मुझे दिखाएं. हमारे पास because in the men's cricket you have the whole domestic structure. वहाँ से players आ रहे होते हैं. Women's का किधर है? अभी हमने And इंटरनेशनल token tournaments don't count as a structure. एग्जैक्टली ये आई थिंक हमारे आज के पॉडकास्ट का जो हाईलाइट है ना वो ये है कि दिस इज़ व्हाट वी नीड टू टॉक अबाउट. आई थिंक एक और एपिसोड हम इस पे ज़रूर करेंगे. बट यू नो हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाया, दे केम एंड दे प्लेड विद द गर्ल्स. दैट शुड रियली बी अप्रिशिएटेड बिकॉज ये बहुत मच नीडेड है ये स्टेप दैट यू इनवाइट इंटरनेशल प्लेयर्स एंड दे कम. That's the final step. Yeah. Where the पहले वाले कहाँ हैं? वही है ना, और वो नज़र आता है बाय द वे देख के कि यू नो वी स्टिल हैव सो मच टू लर्न. बट वही बात है कि वी कैन ओनली होप. और यू नो Tareen Sports Academy is just one cog in the system, right? There's so much Very more. small cog, yeah. Yeah, but कितना और काम है जो कि करना बाकी है for women's cricket, because for men's cricket you are providing so many different आप tours arrange कर रहे हो, आप initiatives करा रहे हो, आप बाहर से staff लेके आ रहे हो, but women's cricket तो आपके घर पे ही neglect हो रही है. उसके लिए आप क्या कर रहे हो? तो गुड लक टू यू फॉर दैट. वी वुड रियली लाइक टू सी कि आप अगली सना मीर, अगली जो निदा डार हैं वो बनाए, आलिया रियाज, ये सब नाम वो हैं जिनको हम चाहते हैं कि वी वांट टू सी देम नॉट replaced but just you know we want वो ये ना कि हाँ we want to see we want more of 10 them. Sanamis, we want to see Fatma 10 Sanas. Aliyazes, yeah. हाँ Why can't we see more of them? या अच्छा, पाकिस्तान में एक और रीजन जो बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा है, जहाँ पे मैसिव टैलेंट है क्रिकेट स्पोर्ट्स का ओवरऑल, वो है गिलगित बल्तिस्तान, विच इज़ लाइक फिल्ड विद सो मच स्पोर्टिंग टैलेंट. यू नो हर तरह का स्पोर्ट वहाँ से हमें लड़कियों में ख़ास तौर पे मिलता है. तो व्हाट आर योर प्लान्स ओवरऑल? अभी तो खैर आप साउथ पंजाब पे फोकस कर रहे हैं, बट पाकिस्तान ओवरऑल just as an example, so जब हमारा कैंप होता है, एक तो the reason the academy exists is mainly for the local players, कि लोधन के players खेलें regularly, ताकि एक दिन इंशाल्लाह लोधन का player खेलेगा for the national team. That's the dream. But at the same time, whenever we do a high level camp, we always invite the best upcoming talent from all over Pakistan. So abhi Aman Azmat was there, Aminullah was there, from KP. We have people from all over Punjab coming in, from Lahore, from Karachi. So it's not limited to South Punjab. Our camps, we do it. We invite people from all over. तो जहाँ भी हम इन लोग नजर आते हैं, we try to give them these kind of technical expertise in the off season, so that they can carry with them in the season. ये कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं? I invite them. But can you tell a bit about how to register themselves in your academy? So the academy is open. Anyone can come play anytime. So we have people live from all over Pakistan living in Lodhana just to play in the academy. Because I'm sure जो लोग देखेंगे ये एपिसोड, उनके अगर माइंड में ये सवाल आए कि हम अगर अपने बच्चों को भेजना चाहें आपकी academy, it's a completely open academy. It's completely free. There's no registration. You can just rock up and start playing. There's no stopping it. लड़कियाँ, लड़के. We have separate days for girls, separate days for boys, and we're making a smaller academy for girls so they can play full time. So it's a completely open academy. Anyone can join. Well, that's lovely. Good luck, Ali, with all of that. बस नहीं, अभी एक और सवाल में तो डेली हमने बातें की है रो. सेगवे था ये भी, जरा आप देखें मैं कितनी प्रोफेशनली आपको पता भी नहीं चला. अभी एक और सवाल मेरा. मैं तो खुश हूँ आके, फिर मुझे हम निकाल लेते जल्दी. नहीं और सर एक कप चाय हलवा खाना है आपसे, आप लाए नहीं है. मतलब एक कप चाय कम गाइस. साउथ पंजाब एक कप सोन हलवा का है हमारा. सोन हलवा चाय देनी है मुझे, आप सोन हलवा मांगे मेरे से. आपने खुद ग्रीन टी, आप खुद इतने फिटनेस के हुए हुए. बट अली, बिफोर यू गो, ये सवाल आपके जितने चाहने वाले, जो कि आई नो बहुत हैं फैंस आपके, विल अली तरीन बी बैक इन द PSL? देखें, इफ आई लर्न एनीथिंग इन पाकिस्तान ना, पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ कमबैक्स. ओह सो हेवी. पाकिस्तान में कमबैक होगी. आपको तो बहुत सारी अटेंशन भी मिलती होगी फ्रॉम योर फीमेल फैंस एज वेल. सो हाउ डू यू डील विद दैट एंड ऑफ द वो अटेंशन? आई डाउट दैट. आर यू जस्ट स्केयर्ड ऑफ बिस्मा के वो देख रही होंगी? आई एम डेफिनेटली स्केयर्ड ऑफ बिस्मा, लेकिन ऐसी कोई बात. अच्छा, प्लेयर्स के साथ भी ये चैलेंज आपको होता होगा, जिस तरह अभी आपने बताया था, एक एग्जांपल दिया था. बट हाउ डू दीज यंग किड्स डील विद फीमेल अटेंशन दैट कम्स विद बीइंग इन द लाइमलाइट? This is not a topic we talk about much. When we have talked about it, it's been Stacey Love. तो वो तो सामने हुआ था, तो उसको तो हमने छुड़वाया था for sure. लेकिन जब ऐसी चीजें होती हैं, they have people. They just, the goal is to have a community around you. I wonder if he's over her. So now whenever that person is playing a match ना, अभी Rizwan tournament, he was in that team. तो when he was bowling ना, वहाँ से हम चीख मारते थे, स्टेसी के लिए विकेट लो, स्टेसी के लिए विकेट. Whatever works. So you have to motivate the guys. Now he's over 18, so now she will not go to jail. So still has hope. Stacey, watch out any day. But ये भी बड़ा important होता है. But I really, आपने अच्छा डॉज किया जो मैंने आपसे भी सवाल किया था about female attention. But anyway, we would love to see you back in PSL, you know, with
in whatever capacity, it's always good to see people who are genuinely invested in social development and not just for the token tournaments, but also like working in, grassroots level pe. But finally, before we wrap up, you proudly say कि you're a girl dad. What does that mean to you, girl dad? और कैसे हम इसको meaningfully जो है apply कर सकते हैं अपनी life में इस sentiment को? तो जब when we first found out my wife was pregnant, मैंने रोज़ दुआ की थी कि या अल्लाह मियाँ प्लीज़ बेटी हो, प्लीज़ बेटी. That's my main दुआ. तो बाकी my दुआ was कि please let it be a female, logical and good at sports. Wow. This is my standard दुआ in every namaz. Female, logical, good at sports. No pressure. तो फिलहाल तो ठीक जा रहे हैं. फिलहाल तो ले लो, हम ठीक जा रहे हैं. तो I really prayed for girls. पहली होगी. What sports does she play? She's अभी playing football, playing cricket. जो स्पोर्ट में खेला था साथ मेरे वो होते हैं. So I really feel कि so as a lot of people tell me कि so obviously my parents traditional लोग ज़्यादा कि why are you wishing for a girl? एक लड़का ज़रूरी है. You have to have a boy. Even when she was pregnant again, Bia. Then I prayed again for a girl. We have 2 girls. I'm super happy. So each time they were like, yeah, don't you want a son? And they were convincing me कि सोचो तुम्हारा बेटा होगा, तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेगा, तुम्हारे साथ दफ्तर जाएगा. मैं कहा मेरी बेटी क्यों नहीं करेगी? Why मेरी बेटी मेरे साथ क्रिकेट क्यों नहीं खेलेगी? मेरी बेटी मेरे साथ दफ्तर क्यों नहीं जाएगी? Of course जाएगी. Beautiful. So I'm very happy कि I have 2 daughters. Inshallah अगर और भी होगा वो भी I will hope कि girls हों, because girls are the best. Girls are Boys the फारे best. होते हैं. Todos. ये मैं तो चाह रही हूँ कि हम आपकी बेटियों से भी whenever I get a chance to meet them, I want to talk to them about what they want to do in sports, because cricket is not the only sport that they can play in Pakistan. But छोटी वाली का क्या inclination है अभी? छोटी का she's more destructive. Oh. So future power hitter है हमारी, but फिलहाल तो just destruction. Yeah, we need power hitters, team तो में. उसको I will foster this destruction everywhere. What kind of a dad are you? Are you a strict dad? And what kind of a dad did you have growing up? किस तरह आप different है from the fatherly figure that you had? So when I growing up always, and even now my father has been my best friend. तो obviously extreme डर लगता है उनसे, लेकिन best friendship भी है. So this is what I try to be with them. बचपन से थी best friendship या वो over time? बचपन में I was working a lot in my formative years. So I think when I joke to my father that we became friends when I was 13. So then that's when we started going out alone and going to lunches, dinners. आपस में हम hang out करते थे. So that's when we really got to know each other properly, and we became friends then. So my goal is to be my kids' best friends. Obviously not कि हर चीज़ everything goes, but strict and obviously boundaries set की हुई हैं, but within those boundaries, besties. Before we wrap up, I want to talk a bit about your scholarship that you just launched. एक बहुत amazing initiative है. Oxford की scholarship के बारे में बताएं ज़रा लोगों को. So हमारी कोशिश है कि ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एट ऑक्सफोर्ड, और हम चाह रहे हैं कि हमारे लोगों को हम ये फैसिलिटी ऑफर कर सकें जो हाई पोटेंशियल लोग हैं. जैसे यू टुक स्कॉलरशिप, अभी यू वर टेलिंग मी अर्लियर टू गो स्टडी इन इंग्लैंड. Amazing thing for you, and now you're able to give back to Pakistan and make Pakistan proud by doing all of these international gigs. So we want people from Pakistan going. So मैं ये clarify कर लूँ कि the scholarship is open to anyone from Pakistan. सिर्फ ये है कि females will be given a special consideration and those from South Punjab. Okay. But the scholarship is open for anyone from Pakistan. Anybody can apply. Anyone can apply. We want everyone to come in, and inshallah Pakistan का नाम वही लोग रोशन करेंगे. And it is called the Ali Tareen. The Tareen Oxford Scholarship. Tareen Oxford Scholarship. Yes. ज़बरदस्त. बहुत मुबारकबाद on that and good luck. I'm sure बहुत सारे नाम हमें इस scholarship के through मिलेंगे और बहुत सारे लोगों को वो एक stepping stone मिलेगा जो कि जिस तरह for example for me it was a huge deal कि मैं afford कर सकूँ to go to the UK and to study and to not worry about finances. So it's and to fulfill your potential. Fulfill my potential. That's the goal. So हर साल तकरीबन 30 लोग होते हैं who get offers from Oxford but can't attend because they don't have the finances. तो हर साल हम लोग waste कर रहे होते हैं. So we want more people to fulfill their potential and be as cool as you are one day. Well, Ali, thank you. It was a pleasure talking to you. And thank you for being our guest on the Ultra Edge podcast. And thank you guys for watching. I hope you guys enjoyed this episode. We will catch you next time. Till then, bye-bye.